is going to be very important because today we are going to do the Pythagoras theorem in this session. Okay, so before proceeding to that, let me have a small introduction of the Swiflearn. भाई जान तो लें what is Swiflearn? ठीक है? Swiflearn, we try harder, India's most sincere learning destination for class 1 to 10. So we can say that it is the India's most sincere learning destination. Now, why it is most sincere? Let's see that. The very first, it is providing 100% live and interactive classes. So the classes are live and interactive also. This is a YouTube class, but in the batch, in the Swiflearn, we provide live and interactive class where you can solve your doubts, ask your doubts, and can resolve any issue related to the studies. Okay, so till then, who all are online, just drop me a message. Hi ma'am, hello ma'am. I'm eagerly waiting for my lovely students to come and say me hi ma'am. Okay, so second thing is that पर्सनलाइज्ड अटेंशन. भाई पर्सनल अटेंशन दी जाती है, ऐसा नहीं है कि बस क्लास में बिठा दिया, ऑनलाइन तो क्लास हो रही है बट अटेंशन नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. सो फॉर टू रिजॉल्व दैट वी हैव मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स. भाई 6 से ज्यादा बच्चे हम एक साथ नहीं पढ़ाते और आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो हम आपको 1:1 और 1:2 का रेशियो भी प्रोवाइड करा सकते हैं. राइट, आफ्टर दैट अ डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम टू ट्रैक and work on the students' progress. So a team is there, a whole team is there. We can say that there is a management like school which is looking after each and everything. I am a teacher here, I am a mentor here, my work is to teach only and to look for your lackings. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो सारा काम होता है ना वो पूरी मेंटर टीम बैठी हुई है. भाई यहाँ पे सारा काम कर रही है, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रही है. वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रही है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, टाइम टू टाइम यहाँ पे पीटीएम्स भी करवाए जाते हैं. ठीक है, तो पीटीएम में क्या होता है भाई, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करी जाती है आपकी प्रोग्रेस, आपकी लैकिंग्स, वेयर यू लैकिंग. गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग. सो आफ्टर दैट cover syllabus as per the school exam schedule and also handle custom request. अभी यहाँ पे सारा जो आपका सिलेबस है वो कवर कराया जाता है स्कूल एग्जाम का. भाई सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड्स है, ऐसे है, ऐसे 1 है, ऐसे 2 है, जो भी सिलेबस आपके स्कूल में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी क्लासेस को शेड्यूल किया जाता है. एंड वी हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट ऑल्सो. सपोज आपके स्कूल में पर्टिकुलर चैप्टर, 3rd चैप्टर था, वो नहीं कराया गया, डायरेक्ट मैम ने जंप कर दिया 7th चैप्टर में, तो आप हमें बता सकते हैं भाई मैम अभी ये स्कूल में नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है लेट्स डू दैट. हम वो भी करेंगे बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म विच इज डिजाइन्ड फॉर यू. Okay, so here we are. Now let's have some more key features. The very first is detailed progress report. अब भाई स्कूल में जाते हैं सबके सब. Yes, we all go to the schools. हम भी गए, स्कूल्स तो गए ही होंगे. Yes, तो वहां पे रिपोर्ट कार्ड्स जब मिलते थे तो इंग्लिश के नीचे कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, राइटिंग, हर सेक्शन अलग. हाय मैम, हेलो माया. ओके, सो सब कुछ दिया रहता था ना. दैट मैथ्स में सपोज कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो वही उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है. आपका हर एक पॉइंट जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर एक पॉइंट आपसे डिस्कस, आपके पेरेंट्स के साथ और आपके साथ डिस्कस किया जाता है. स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज, सैट्स जिसको कहते हैं, भाई बहुत तरीके के सैट्स टेस्ट होते हैं, तो इसमें एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है जहाँ पे आप बहुत सारे टेस्ट अपनी क्लास के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं भाई. उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होने वाला है कि आने वाली लाइफ में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे ना तो वहां पे टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है. यू कैन टेक अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आल्सो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल एग्जाम्स एंड हियर आर सब्जेक्टिव टेस्ट आल्सो. ये सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं. हेलो मैम, हेलो रेखा. सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं. स्कूल में क्या करेंगे, मैथ्स में तो भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लिखना तो पड़ेगा ही. यस, so for that we have lots of subjective tests for exams. So what you are going to do now, क्या करना है, just type on Google www.swiflearn.com, book a free trial class now. Okay, for that one of the academic or the mentor team will be there to teach you for 1 hour, and after that you can decide that which course you are going to buy. Okay, so I think it is clear to everyone. Hello Vipin, hello. So
वी हैव, अब इतना सारा सब स्विफ्टलर्न में इतना सारा है तो क्या करने वाले हैं आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। व्हाई द बेल आइकन? बिकॉज तभी आपको कल पता चलेगा कि कल स्विफ्टलर्न में कौन कौन सी क्लासेस शेड्यूल होने वाली हैं और उनका टाइमिंग क्या है। यस, फॉर दैट लाइक द वीडियो। इफ आपको कंसेप्ट सारे समझ में आ गए, कमेंट, कोई सजेशन है, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप, कुछ कस्टम्स रिक्वेस्ट है आपकी, सो यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर द शेयर, जरूर शेयर कीजिए अपने classmates को, अपने society friends को, so that they all get to know that Swiflearn is providing live classes on the YouTube. Clear? So let's move to the today's topic, that is the triangle and its properties, session number 4. Yes, it is session number 4. We have already done session 1, session 2, session 3 and session 4. You can go for that also. Clear? So, have you completed your homework? अब बता दीजिए जो आज लाइव ऑडियंस है उसमें से किसने होमवर्क किया। ओके, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। अब रिमेंबर मैम ने लास्ट सेशन में क्या होमवर्क दिया था, अगर नहीं रिमेंबर है तो जस्ट गो टू दैट सेशन नंबर 3 एंड लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टुडे? आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। As I already told you about that, we have how many types of triangle? Yes, hello Neelam. So we have how many types of triangle? Acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle. Yes, isosceles triangle, equilateral triangle. So on all that, today we will be learning about Pythagoras property in a right angle triangle. So do you remember what we discussed in the last class? We discussed about the two types of triangles, that was equilateral triangle and isosceles triangle, right? So who is going to tell me in the chat box that what is the specific property of the isosceles triangle? Yes, I'm waiting. Who is going to tell me that what will be the specific quality for the, yes, let me get a pencil first. Yes, here it is. So yes, just drop me a message in the chat box that ma'am isosceles triangle में ये specific होता है. Okay, till then let's look this example. Suppose as you can see here that two signs are there. So मैंने आपको परसों भी last class में कल मैंने आपको arrow करके बताया था, right? So that आपको कभी ना भूलें, इसके सामने वाला angle this one, इसके सामने वाला angle this one, दोनों equal होने वाले because two signs are there, two equal signs are there. Which that mean this angle will also be x degree. This angle is also going to be x degree. Okay, so we know that from the angle sum property, we know that all the three angles sum up to be 180 degree. And what we are going to write in the bracket, I told you that always just put the theorem in the bracket. मैम को नहीं पता चलने वाला है कि आप कौन सी theorem से कर रहे हैं, चाहे मैम को सब कुछ पता हो. So for that you need to write the theorem in the bracket. Angle sum property. Okay, I'm just writing that in shortcut. Angle sum property. Okay, now x plus x is going to be 2x plus 100. And if you are my lovely students, if you are solving this, then drop me message in the chat box that what is the answer, what should be the answer. So 2x is going to be 180 degree. As I told you, this is plus 100. And when this will go to the, when this will cross the bridge, so this plus will become minus. Very simple. This plus will become minus when this will cross the bridge. By bridge बहुत specific है. आया था? Yes. So this is again 2x is equal to 180 minus 100, that is 80. Now this 2 is in multiplication, right? 2 is in multiplication. So that multiplication will go to the where? Right? So bridge है उसने उसको क्या बना दिया? Division बना दिया. So answer is 40 degree. So I can say that these two angles are 40 degree. These two angles are 40 degree. Clear? I think clear. This is 40 degree and this is also 40 degree. Okay, so let's move to the next. Is it possible to have a triangle with the following sides? In the tomorrow's session, I told you that the sum of any two sides of a triangle is greater than
third side. Yes, the sum of any two sides of a triangle is greater than third sides. Remember this. Okay, so what will happen after that? 3 plus 6, let's check out. Is 3 plus 6 greater than 7? Yes. 9 is greater than 7. This is true. Okay, is now 6 plus 7, is 6 plus 7 is greater than 3? Yes, 6 plus 7 is 13. 13 is greater than 3. This is also true. Now, the next one. Is 7 plus 3 greater than 3? Sorry, 7 plus 3 is greater than 6. Yes, 10 is greater than 6. So, we can say that, yes, these three statements are true. So, we can say that this triangle is possible. Okay, so the second question is for my lovely students who are watching me live. Just do this, okay, and tell me that will this be a triangle or not. So for that you are going to what क्या करना है आपको? What you are going to do? Just add these two, then check out is the addition is greater than 2. After that, just add these two, check out that is the addition greater than 6. Okay, after that add 6 and 2 and just look that is it greater than 3. So you need to add two sides and check is it greater than third or not. Okay, so this was okay. As we know that the sum of length of any two sides of a triangle is greater than the third side, and this property we are using in these questions, right? Yes. So is the sum of any two angle of a triangle is greater than the third angle? This is for you. Is the sum of any two angles of a triangle always greater than the third angle? Yes. Who is going to tell me this? Just drop me a message in the chat box. Okay, everyone, just drop me a message in the chat box. Okay, not always. It is possible, but not always. In some cases it is possible, but it is not always true. Okay, so the best example is to quote here is right angle triangle. किसके लिए best example है? Best example किसके लिए है? The sum of any two angles is always greater than the third angle. इसका एक example हमारे पास है right angle triangle. Okay, so what is right angle triangle? A right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degree. Okay, in which one angle is 90 degree. It could be any angle. कोई भी हो सकता है ABC में से. अब यहाँ पे कौन सा specific angle है? यहाँ पे B है. So we can say that this B is the right angle. And क्या पहचान होती है? How we decide that which one is the right angle? वहां पे एक ऐसा साइन बना होता है, just half a rectangle. Okay, so अगर किसी भी क्वेश्चन में half a rectangle किसी भी एंगल में बनाया होता है तो no doubt that angle is 90 degree. कोई confusion ही नहीं होना चाहिए. वहां पे वो क्या हो गया? वो हो गया 90 degree. Now let's see. As we know that angle B is 90 degree. Now by the triangle sum property of a triangle, angle sum property of a triangle, we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Okay, so I have put the value of angle B here. B कितना था? B is 90. So I have put here 90. Now what I'm going to do? I will shift this 90 from here to here because number will go to the number. भाई नंबर को नंबर के पास जाना पड़ेगा और अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के साथ, मतलब वेरिएबल्स जो है वो एक साइड रहेंगे और जो नंबर्स हैं कांस्टेंट है वो एक साइड रहेंगे. So when 90 will go there, that will be subtracted and that answer will be 90. So we can say that here angle A plus angle C is equal to 90. So we can say that in a right angle triangle the sum of two acute angle is always 90. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल प्रूव हो गया जो हमने पूछा था. क्या किन्हीं भी दो साइड का सम, क्या तीसरी किन्हीं भी दो एंगल्स का सम क्या तीसरे एंगल के इक्वल हो सकता है? यस, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. एंड व्हाट इज 90 डिग्री? 90 डिग्री इज द थर्ड एंगल. क्लियर? सो लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल. सो ऑलवेज रिमेंबर राइट एंगल ट्राइंगल. अभी देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, वी कॉल दैट हाइपोटेन्यूज. What we call that? We call that side is hypotenuse, and hypotenuse is the longest side of that triangle. Always remember,
Hypotenuse is the longest side of the triangle. These are called the legs. ये दो legs कहलाते हैं, this one and this one. Suppose अगर आप अपने हाथ को ऐसे कर लें, just do this like this. अब ये दिख रहा है, this is a leg and this is a leg, and this is hypotenuse. What is this? This is hypotenuse. Clear? So अगर कभी भी hypotenuse को समझने में दिक्कत हो, तो जहां पे राइट एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने एरो को पुट अप कर दीजिए and that will become the hypotenuse. Okay, these are legs. Legs के अलावा we call them specifically perpendicular भी कहते हैं. We call this perpendicular also and we call this base also. Base मतलब जिसमें ट्राइंगल खड़ा है. बेस ऐसे भी हो सकता है ना. ओके, आप अपना हाथ ऐसे कर लीजिए, तो अभी ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया, सीधा है ना. तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूं तो ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज देखिए, हाइपोटेन्यूज तो सेम है, ये देखिए हाइपोटेन्यूज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. बट व्हेन आई एम डूइंग लाइक दिस, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस. कैन यू सी दिस? So we can say that जो लाइन पर सीधी रहेगी बिल्कुल, that will be the perpendicular, और जो horizontal रहेगी, that will be the base. Vertical and horizontal. So clear? We call them legs also and we call them perpendicular and base also. Is it clear? We call the perpendicular, we call it base, and the longest side is called to be hypotenuse. Okay, so if the concepts are clear, show me thumbs up in the chat box. Okay, now let's move further. The side opposite to the right angle is called the hypotenuse and other two sides of a triangle are called legs. Okay, also there is a perfect relation between the sides of a right angle triangle. We have a perfect relation between them. What is the relation? Let's see that. The square of the hypotenuse, as you can see here, that I have mentioned this A. Okay, so A means A could be anything, 2, 5, 6, 3, whatever. Okay, so we can say that A is the measurement of this AC. ये जो AC है, इसका measurement दे दिया गया है what? A. AB का measurement दे दिया गया है B. And what is the measurement for BC? The measurement for BC is C. Clear? I think very much clear. After that, there is a relationship between these three, which we call Pythagoras theorem or Pythagoras property. And what is that? That is the square of the hypotenuse. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the legs. Means it is the sum of perpendicular and base square. ठीक है, तो स्क्वायर तीनों जगह लगाना है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर सब जगह आएगा. So we can say that square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the leg. Sum of the square, दो चीजों का सम है, सम होगा तो दो चीजें होंगी, दोनों चीजों का स्क्वायर करके जो सम आएगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा. Let's take an example. Let's suppose this is 5, this is 4 and this is 3. Okay, let's do this. Okay, let's do this. I told you, what is the A square? 5, 5s are 25. Okay, this is A is given, so I have written A square. Now what will be B? What will be B square? B is 4, 4 4s are 16. Clear? Okay. Now C square, what will be C? 3 into 3. So that is 9. So what you are going to do? You are going to square all the sides. Now just see, is B square, what is B square plus C square? Because भाई जो सबसे हाईएस्ट साइड है उसका तो स्क्वायर करना ही नहीं है ना, हाईएस्ट तो 5 है, हाईएस्ट को हमें चेक करना है, ठीक है. लॉन्गेस्ट साइड मींस, so what is B square? B square is 16, C square is 9, and what is the sum? The sum is 25. And what is 25? 25 is A square. 25 is A square. So I can say that A square is equal to B square plus C square. So we can say that 3, 4, 5. The triangle with the sides 3, 4 and 5 is a right angle triangle. अगर मुझसे पूछा गया कि क्या ये right angle triangle है? So what I'm going to do? I'm going to find out the square of each side.
Then I am going to add two sides so that the sum is the square of third side. Then this will be proof that this is a right angle triangle, and this is the property of only right angle triangle. ये property equilateral triangle, isosceles triangle, right triangle में लगानी है. Okay? Isosceles और equilateral triangle में भी right angle possible है. I'm not saying that. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, but जो property है वो right angle triangle की. Okay? Clear? So let's move further. Any combination of three sides holding the Pythagoras theorem will be a right angle triangle. अगर ये जो combination है, किस combination की बात हो रही है? Sorry, let me change the color. A square plus B square is equal to C square is the Pythagoras theorem. तो ये combination है three sides का, तो वो triangle क्या हो जाएगा? Right angle triangle हो जाएगा. Now one more thing. अभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि what is Pythagoras theorem? So what are you going to say? What are you going to say? You will say a square plus b square is equal to c square. But where is the a square, b square and c square? दिख रहे हैं कहीं space में? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं अपने रूम के अराउंड. आपको दिख रहे हैं? नहीं ना? So always remember one thing. I have asked many students and always they say like this, ma'am, a square plus b square is equal to c square. But what is ABC? So your answer should be the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of perpendicular and base. Clear? और in a right angle triangle भी लगाना है. तो आपका statement क्या होना चाहिए? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the square of the sum of the square of other two sides. Clear? So please, whenever I will ask you, your teacher or anyone in the life or in the future will ask you, what is Pythagoras theorem? तो ये कभी नहीं बोलना है कि a square plus b square is equal to c square होता है. ये representation है. जब मैं triangle को show करूंगी कि ये a है, ये b है और ये c है. ठीक है? Clear? I think it is clear to everyone. If it is not, then just drop me a message in the chat box that ma'am नहीं समझ में आ रहा है. और अगर मैम समझ में आ रहा है, then again show me a thumbs up. Okay, so this is a visualization we can see here. अभी देखिए, I am going to slide this. So देखिए, मैं जो green वाला box है, इस green वाले box के लिए I am doing the activity. देखिए, what is going on? देखिए, ये जो 3 वाला square है, it is going up to B and setting in the 5 square. As I अभी मैंने आपको बताया 3, 4, 5 क्या बनाते हैं? Right angle triangle बनाते हैं. Now just have a look for the 4. What is going for the 4? 4 is, yes, so it is setting with the 5 square. So this is the square, this is the square. इस square का एरिया कैसे निकाला हमने? बताइए. इस square का एरिया 3 into 3. इस square का एरिया 4 into 4. 3 into 3 निकाला. We have यहाँ पे 4 into 4 निकाला and they have sum up to be the 25. They have adjusted in the 5 square. So this is where the Pythagoras property is visualized. Okay, I think it is clear to everyone. Okay, so what is the fact? The triangle and 2 is a type of defense used in the basketball. So how many of you like to play basketball? I don't like to play. मैंने अपने schools में sports के पीरियड में सिर्फ खेला है. Okay, but yeah, हमने खेला जरूर है. So I don't know much about the tricks and the defense system, but yes, it is that. So as you can see, a triangle is forming. So what are they doing basically? They are just defending their goal, right? Okay. So let's solve some questions. Find the unknown length x in the given triangle. Okay, find the unknown length x in the given triangle. So the very first आपको दिखना चाहिए ये right angle triangle है. अब भाई क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि ये right angle triangle है. As I already told you, जहाँ पे ये साइन लग गया, it means ये right angle triangle है. जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि right angle triangle है, but you have to look for the sign. Okay, so हमने साइन को देखा तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि ये तो right angle triangle है. अब right angle triangle है तो what we are going to apply in this? We are going to apply Pythagoras property in this. And what is the Pythagoras property?
हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे पता चला भाई, बी के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। सो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी इक्वल with AB square plus BC square, and this is AB square and this is BC square. Okay, so what is that? That is x square. So they have written x square, AB is 6 and plus 8 square. So how we are going to solve this? What is the square of 6? The square of 6 is 36. And what is the square of 8? 8 का square होता है 64. They have added up to the 100. Okay, now here comes the problem. अभी आ गया x square is equal to 100. आप लोग सोचते हैं कि ये आंसर हो गया. How? They have asked the value of x and you are here with the value of x square. यहाँ पे तो x square की वैल्यू है, पूछा तो x था, अब क्या करें, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो 100 है we are going to write this in the form of square. Always, अभी आप 7th क्लास में हैं तो यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो किसी ना किसी का स्क्वायर होंगे. Always remember one thing. अभी आप हायर क्लासेस में जाएंगे सो हो सकता है आपको ऐसा भी आ जाए, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है जो आप 8th क्लास में जाके पढ़ने वाले हैं, राइट। सो अभी मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में नहीं बता रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग यू दैट कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा स्क्वायर का ही कोई नंबर होगा। स्क्वायर की टेबल सबको आती है, यस। 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 and 10 10 100. तो यहाँ पे आ गया 10 10 100, right? So what I'm going to write, x square is equal to 10 square. अब भाई यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, कैंसल आउट कर देते हैं। तो x, what will be the value of x? The value of x is going to be 10. Okay, so always remember one thing, आपके पास जो स्क्वायर आने वाले हैं ना वो सिर्फ 1 4 9 16 25 36 49 84 81 and 100 आने वाले हैं, and these are the square of numbers 1 to 10. Okay, yes. So let's move further, and if there is any problem then just send me a message in the chat box. Okay, the sides of a triangle are 7.5, 4 and 8.5. अब देखिए इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 8.5. This is the longest one, so this will be the hypotenuse if this will be a right angle triangle. So is this a right triangle? क्या ये right triangle होगा? तो अगर ये right triangle होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सपोर्ट करेगा, यस डेफिनेटली करेगा। अगर ये राइट ट्राइंगल होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो सॉरी बिकॉज ऐसे में मुझे फिर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। यस, सो लेट मी मेक इट स्मॉल। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए पहले, बट ये है कि नहीं है, लेट्स चेक इट, वी आर चेकिंग इट, ठीक है। लॉन्गेस्ट 8.5 हो गई, बाकी आप किसी को भी 7.5 लिख दीजिए और इसको 4 लिख दीजिए। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, 8.5 का स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू राइट इट प्रॉपरली, ओके, ABC लाइक दैट। So when I will find the square of 8.5, what that will be? 8.5 का स्क्वायर क्या होने वाला है? Who is going to tell me? Just drop me a message in the chat box that 8.5 multiplied by 8.5 is how much? And you are going to do that calculation. मेरी calculation पे मत जाइए, ठीक है? Okay, 72.25. Clear? Now I'm going to find out the square of 7.5. What is the square of 7.5? The square of 7.5 is 56.25. Okay, and what is the square of 4? 4 square is 16. Now just check out, are the sum of 2 is equal to this other? मैंने स्क्वायर्स तो निकाल दिया, अब स्क्वायर तो नहीं बोलूंगी ना। क्या 56.25 को ऐड करके 72.25 आ रहा है? If it is coming, then yes, it is a right angle triangle. और अगर नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे no, it is not a right angle triangle, but it is coming out to be 56.25 plus 16 is coming out to be 72.25. So we can say that this is a right triangle.
Why this is a right triangle? Because the square of the sum of the square of two sides is equal to the third side. Okay, and which side is the hypotenuse? Hypotenuse कौन सी साइड होने वाली है भैया? तो longest वाली है, वो hypotenuse हो जाएगी. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? Now comes to the triangle questions. Can a triangle have two right angles? अब दो right angle हो सकते हैं. चलिए possibility देख लेते हैं. भाई ये मैंने base बना दिया. Okay, let me change the color. Okay, I have maken this base. अब इस पे अगर मैं एक 90 डिग्री बनाऊंगी तो ऐसे जाएगा, और एक 90 डिग्री बना दूंगी तो ऐसे जाएगा. भाई 90 डिग्री तो सीधे सीधे जाएंगे ना, मीट कहाँ करेंगे? जब तक मीट नहीं करेंगे तो ट्राइंगल कैसे बनेगा? और वी हैव वन मोर थिंग. ये मैंने आपको सिर्फ विजुलाइज करने के लिए समझाया है. वन मोर थिंग, इफ आई विल राइट 90, एक 90 हो गया, दूसरा भी 90 हो गया, क्या तीसरा एंगल छोड़ दिया 180 डिग्री? क्या यहाँ पे जगह बचाई है इन्होंने 90 डिग्री को कुछ बनाने के लिए? भाई 90 प्लस 90 तो अपने आप ही 180 होता है. अब ये डिग्री क्या 0 डिग्री हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सो नो, द ट्राइंगल विथ टू राइट एंगल्स इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल मैंने आपको बता दिया. किसी भी तरीके से समझ जाइए. लाइन के ऊपर दो सीधी लाइन खड़ी कर देंगे तब भी नहीं बनने वाला, और दो को 90-90 बना दिया तो तीसरे एंगल के लिए तो जगह ही नहीं बची. और हमने पढ़ा है भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये तो पढ़ा ही नहीं कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है. राइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो व्हाट कैन a triangle have two obtuse angle? अब obtuse angle का आप मुझे फंडा बताने वाले हैं. क्या दो obtuse angles हो सकते हैं? ठीक है, ओके, क्या टू obtuse angle हो सकते हैं? This you are going to tell me in the chat box. Two acute angles, yes it is possible. भाई दो acute angle तो हो ही सकते हैं. अभी तो बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में भी हो रहे हैं. ठीक है, ऑल एंगल्स मोर देन 60. अब देखिए क्या ऑल एंगल, भाई मिनिमम कितना होता है? अगर मुझे 360, 60 और 60 हो सकते हैं. ठीक है, तभी तो इनका सम ऑफ 180 डिग्री होगा. अब तीनों 60 से बड़े हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं. यहाँ पे 180 से ज्यादा तो हम जा ही नहीं सकते. इसको मैं 1 डिग्री भी बढ़ाऊंगी तो मुझे यहाँ पे 181 लाना पड़ेगा. राइट, सो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल. ऑल एंगल्स लेस देन 60, ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, all angles equal to 60, yes, this is the possibility. So always try to remember one thing, always not try to remember, as I told you one day, what is the important thing to remember is there is nothing to remember, right? For that मैंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा था. I hope आप सबने करी होगी कि just cut out random triangles in your notebook from your waste paper, और just उसके आप एक बारी angles measure कर लीजिए. Believe me, all the angles are coming out to be 180 डिग्री. सबका सम 180 डिग्री आना होगा. तो आप जब ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ना तो दिस इज फॉर द लाइफ टाइम. वो कंसेप्ट आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. अब 180 डिग्री होता है तो उसके लिए भाई 60 60 60 तीनों या तो 60 के इक्वल हो सकते हैं, तीनों 60 से छोटे भी नहीं हो सकते और तीनों 60 से बड़े भी नहीं हो सकते. ऊपर नीचे हो सकते हैं. कोई 60 हो गया, कोई 40 हो गया, ठीक है, फिर कोई 80 हो गया, ऐसा हो सकता है. लेकिन अगर 60 60 60 लाना है तो सिर्फ 60 60 60 ही होगा. तीनों 60 से छोटे नहीं हो सकते और तीनों 60 से बड़े नहीं हो सकते. ठीक है, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय obtuse angles answer. Okay, and it is not necessary that who all are watching me live, that's fine, but those students who will watch me after the live stream will be over, you can also answer me in the comment box. और भाई Swiflearn प्लेटफॉर्म का नाम तो सबको पता ही है, तो ठीक है, who are watching me right now, just subscribe the channel, okay, so that हम ये प्यारे प्यारे वीडियोस, ये प्यारे प्यारे ट्राइंगल्स, can you see how cutie it is, हम आप तक पहुंचा सके. Okay, clear? Let's move to the next question. In a triangle, angle A is 72 degree and angle B is 60 degree. Okay, so find out the angle C. भाई जल्दी से, ये क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत इजी है, इसको हम जल्दी से करने वाले हैं. एक ट्राइंगल बना दिया, इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दिया. ठीक है, अब एक ट्राइंगल बना दिया, इसमें एक एंगल 63, एक एंगल 72. फाइंड आउट द नेक्स्ट वन. तीनों का सम 180 डिग्री. सो जस्ट ऐड 72 and 63 and subtract from 180. Okay, so this is how you are going to do this question, and what you will write in the bracket. Always remember angle sum property of a triangle. Clear? So 72 plus 63. Yes, my lovely audience, just reply what is 72 plus 60 degree.
And what will be the answer if I will subtract it from the 180 degree? This is a maths class. Just don't sit without a pen or a notebook. Okay, I have also a pen. मैं भी maths class में एक digital pen लेकर बैठी हुई हूँ. So you also have to take a notebook and a pen so that you can solve all the questions with me, your Kanchan mentor from the Swiflearn. Okay, so let's move. And I'm still waiting for my answers to come. Okay, find the angles of a triangle which are in the ratio 4:3:2. Okay, so 4:3:2 के रेशो में होने वाले हैं. तो हम क्या करने वाले हैं भाई, इनको कन्वर्ट करने के लिए हम 4x, 3x and 2x. Let the angle be in the ratio x. ठीक है, x डिग्री. तो अगर हमें रेशो में दिया हुआ है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 4x, 3x and 2x करेंगे. This is the very easiest method. Now after that, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9x is equal to 180 degree. This question is already done, I think, in the previous section. So that will be 9. So that will be 20 degree. So you're going to multiply. वो देखिए एंगल क्या थे, 4x, 3x and 2x. So what you're going to do, 4 into 20 that is 80 degree, 3 into 20 that is 60 degree and 2 into 20 that is 40 degree. So always remember, जब भी क्वेश्चंस आपके पास रेशो में आए ना 4:3:2, यस बच्चों, कभी भी 3:2 रेशो में कभी भी क्वेश्चन आए उसको टोटल में कन्वर्ट करने के लिए आप x से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए. सम अब देख लीजिए भाई, एंगल्स है तो सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा. एंगल्स है ना, इसलिए मैंने सम 180 डिग्री लिखा है. क्लियर? ओके. Each of the two equal angles in an isosceles triangle is twice the third angle. ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो चलिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं. ओके, जस्ट लेट मी टेक स्केल. यस, यहाँ पे बना देती हूँ मैं. ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग, ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो भाई बेस एंगल्स तो इक्वल होने वाले हैं. ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं. इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, तो इसके ट्वाइस हैं दोनों. तो अगर मैं थर्ड एंगल को x ले लेती हूँ तो दिस विल बिकम 2x. okay, and if this is 2x, so this will also be 2x. Why this will also be 2x? Because this is an isosceles triangle, and in isosceles triangle the base angles are equal. okay, so this is how. Now again very easy, x में क्वेश्चन आ गया भाई, x को सॉल्व करने में तो बहुत मजा आता है. x plus 2x plus 2x is equal to 180 degree. After that, okay, and the triangle is also trying to teach you. okay, can you see? Dinda. okay, as you know, my school teachers used to say this Janda as a Gyan Devta. okay, but I don't think आजकल की जनरेशन को इस ज्ञान देवता की जरूरत है. You have already lots and lots to study. मतलब आपके पास तो ऐसे प्लेटफॉर्म है Swiflearn जैसे where you can easily resolve your all doubts, right? So ज्ञान देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी. Yes. Okay, so here it is. 2 plus 2 4, 4 plus 1 5. Now x is equal to 180 divided by 5. Just now calculate. How you are going to calculate this? ठीक है, अब calculate कर लीजिए. Okay, 5 3s are 15. Okay, 5 3s are 15. काटना तो सबको आता होगा, 7th क्लास में पहुंच चुके हैं. You are grown up now, so काटना सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. 5 3s are 15, बचा 3, 5 6 are 30. Sorry, yeah. Now you are going to multiply the 36 degree with this, with this, with this. ठीक है, 2 into 36 कर लेंगे आप, तो your answer will be there. Okay, clear? Okay. In the given figure, alongside the measurement of angle ACD, so what will be the measurement of angle ACD? Which property is today? As this is our last session, so we are doing questions of all the sessions. Okay, so which property I am going to apply here? Exterior angle property. Which property? Exterior angle property. And what is the exterior angle property? Yes, very good, Kimo Bagra. Okay, so yes, now tell me the answer for exterior angle property. So as I know that exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle. भाई interior opposite angle ये रहे दो, इन दोनों को sum up कर दीजिए, यहाँ पे exterior angle आ जाएगा. Yes, I think it is.
So what you're going to do now, just write me this, that what will be 75 plus 45 in the chat box. That will be the measurement of angle ACD. Okay. Yes. Okay. In the given figure, alongside find the value of x and y. I think this is very easy. How this is very easy? 65 है, लीनियर पेयर पढ़ा था. लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर देखिए देयर आर 2 or 3 मेथड्स टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, आप देखिए 65 इज एक्सटीरियर एंगल. 65 एक एक्सटीरियर एंगल है, तो आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं इन दोनों का सम होना चाहिए 65. ओके, इन दोनों का सम होना चाहिए 65. इसमें से एक 32 दे दिया, तो दूसरा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दूसरा? 33. भाई दोनों का सम 65 है, दो चीजों का सम 65 है. अगर एक 32 है तो 65 में से 32 को माइनस कर लीजिए. ठीक है, तो 33 आ जाएगा. अब आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं. आप चाहे तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा लीजिए, क्योंकि भाई ए बी सी तो एक ट्राइंगल है, तो आप कर सकते हैं 32 प्लस 33 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी. और you can apply also y plus 65 is equal to 180 degree. y plus 65 is equal to 180 degree. ये भी बिल्कुल सही तरीका होगा, लेकिन for that you need to write linear pair. अभी यहाँ ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी मत लिख के आ जाइएगा. ठीक है, you need to write here linear pair. क्या लिखना है? linear pair लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप linear pair का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. So it depends on you that which concept you are using. linear pair सम भी 180 डिग्री होता है एक्सक्यूज मी, और एंगल सम प्रॉपर्टी का सम भी 180 डिग्री होता है. क्लियर? आई थिंक क्लियर. An exterior angle of a triangle is 100 degree and its interior opposite angle are equal to each other. इसे बना लेते हैं एक ट्राइंगल. ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. आई एम जस्ट मेकिंग द फिगर. एक एक्सटीरियर एंगल दे हैव सेड 100 है. ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल. यही दोनों होते हैं ना इंटीरियर एंगल, सो दे आर इक्वल. सो दैट विल बी x डिग्री एंड दैट विल बी x डिग्री. राइट, दोनों x डिग्री हो गए. अब फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. अब सबका निकालना है. ईच बोला है ना, तो याद रखिए x का भी निकालना है, और यहाँ पे इसको y लिख दीजिए. इसका भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ईच एंगल बोला है. तो भाई बहुत सिंपल सा, मुझे तो सामने सामने आंसर पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा. भाई ये 100 है, हमें पता है x प्लस x कितना आएगा. x प्लस x इज कमिंग आउट टू बी 100. सो कितना हो जाएगा? 2x is coming out to be 100 और x will be 50 degree. Why x will be 50 degree? भाई 50 plus 50 100 होता है, दो इक्वल एंगल्स हैं, दोनों का सम 100 है. ठीक है, अब y को अगेन हेयर, y को आप किससे निकाल सकते हैं? लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेजरमेंट मिल गया 50, यहाँ पे भी मेजरमेंट मुझे मिल गया 50. तो जो थर्ड एंगल है y, वो किसी भी तरीके से निकल सकता है. लीनियर पेयर से भी निकल सकता है और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकल सकता है. एंगल सम प्रॉपर्टी में 3 एंगल्स होते हैं, उसमें से अगर 1 मिसिंग है और 2 दिए हुए हैं, तो हम उस मिसिंग एंगल को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? क्लियर? से वेरी मच क्लियर? नो, नॉट वेरी मच क्लियर, इट्स क्लियर मैम. 2 sides of a triangle are 5 and 9 centimeter. What can be the length of its third side? As I told you that day. What can be the length of third side? हमें रेंज देनी है. हमें रेंज देनी है. Yes, हमने जहां पर पढ़ा था कि the sum of any 2 sides of a triangle is greater than the third side. So क्या करेंगे? मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी? 5 plus 9 that is 14 और मिनिमम रेंज क्या हो जाएगी? 9 minus 5 that is 4. तो जो थर्ड साइड का मेजरमेंट आएगा वो 4 से किसके बीच में आ सकता है? 14 के बीच में आ सकता है. So what you are going to do? You are going to add up the two values. That will be the maximum value. You are going to subtract the two values. That will be the minimum value. So the third side will be in between 4 to 15. Okay? Clear? Okay, now. P is a point in the interior of a triangle ABC. P is a point on the interior of a triangle ABC. Then fill in the blanks with greater than or smaller than. भाई क्रोकोडाइल को जो पसंद है उसकी तरफ वो मुंह खोलेगा. ओके, दिस इज हाउ छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है. क्रोकोडाइल का मुंह है, वहां खुलेगा जहां पे उसको ज्यादा मिलेगा. ठीक है, तो देख लेते हैं. भाई देखिए, PA प्लस PB, PA प्लस PB. अब भाई इस ट्राइंगल को कंसिडर करिए. अगेन
जिगजैग करने का मेरा सिर्फ पर्पस यही होता है कि आपको वो प्रॉपरली विजिबल हो. Okay, let me take the other color. Okay, so the sum of any two sides is greater than AB. Okay, now PB plus PC. PB plus PC will be greater than BC. The sum of any two sides of a triangle is greater than third side. Now PA plus PC. PA plus PC will be greater than AC. So we can say that the sum of any two sides of a triangle is greater than third side, and we are using this property in this question. Okay. AM is the median of a triangle ABC. Prove that AB plus BC plus CA is greater than 2AM. Okay. कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था in the last session. Okay, so yes, today we will do it again. AB लिख दीजिए. मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो AM है उसको आप हमेशा कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड रखेंगे. तो हम लगाएंगे थ्योरम दोनों में. थ्योरम नहीं, प्रॉपर्टी. इन ट्राइंगल ABM, AB plus BM is greater than AM. ठीक है, AM से बड़ा है. अगर मैं किस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ? मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ जिसको मैं शेड कर रही हूँ. तो the sum of two sides AB plus BM is greater than AM. ठीक है. Now put this theorem in the next triangle. Which is the next triangle? The next triangle is AMC, or you can say that ACM. Okay, so what that will be? That will be again AC plus CM is greater than AM. Now this is equation number 1 and this is equation number 2. Yes, very good. Y is equal to 80. Very nice. Chemo Bagra, very nice. So AM plus BM is greater than AM and AC plus CM is greater than M. Now we have two equations. We are going to add them. In the last session, please, if you want the whole explanation, because this is the question we are doing in the last time. So if you want the explanation, you can watch my session 3. So in that, I told you that left hand side will get add to left hand side and right hand side will get add to right hand side. So AB plus BM, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे देख लेते हैं. Let me change it. तो हम कैसे ऐड करने वाले हैं? AB plus BM plus AC plus CM is greater than AM plus AM. Now this AM will become 2AM. Okay, AB मिल गया, AB मिल गया, BC AC मिल गया, AC मिल गया. अब BC कैसे मिलेगा? तो BC कैसे मिलेगा भाई? BM और CM को ऐड कर देंगे तो BC मिल जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. हो गया कुछ. तो क्या करना था हमें? What should be done here? What you need to do? You need to apply that particular theorem that sum of any two sides of a triangle is greater than third side in both the triangles and add left hand side to left hand side and right hand side to right hand side. आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा. Clear? Okay. If O is the point in the exterior of a triangle ABC, ठीक है, then show that. Again, this type of question. Again, you can do this by the same property. OB plus OA plus OB plus OC. OA plus OB plus OC. So put this in the triangle. आप triangle में लगाएंगे and you will absolutely you can solve this question. क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ ली है तो आप कर सकते हैं. ठीक है, OA है, ठीक है, OB है और OC है. तो तीनों का ले लीजिए. OA का आप क्या ले सकते हैं? OA ग्रेटर है, ठीक है, OA. तो आप लिख सकते हैं AB plus OB is greater than AO. ठीक है. Similarly for the next side and similarly for the next side. तीनों साइड्स का लिख के तीनों ट्राइंगल्स में कंसेप्ट्स लेके तीनों को आप एड अप करेंगे. There the question will be there. वहां पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. Clear? Okay. So this is for your homework. And again, if you find any problem in doing this, suppose आपने क्वेश्चन किया, you are watching it now. After that अगर फिर से देखेंगे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, just drop me a message in the comment box so that in further sessions, जो आने वाले सेशन है दूसरे चैप्टर्स के, उसमें मैं आपको क्वेश्चन 100% कराऊंगी. That is my guarantee and my team's guarantee. Okay, so not a problem. In triangle ABC, angle B is equal to 35 degree and angle C is equal to 55 degree.
ओके, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं, जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है, ठीक है। सो एक एंगल इसमें क्या दिया हुआ, लेट्स सी। एक एंगल इसमें 35 दे रखा है और एक एंगल 55 दे रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं तीसरा एंगल कितना आएगा। हो सकता है राइट एंगल आ जाए, तो जस्ट ऐड 35 एंड 55। व्हाट द ऐड विल बी, 5 और 5 10, 5 9, 90 आ गया, 90 आ गया। अब 90 आया है, ठीक है। एंगल बी 35 था, एंगल सी 55 था, तो राइट एंगल कहाँ पे बन गया, ए पे बन गया। यहाँ पे आपको इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि यू नीड टू फाइंड आउट दैट वेयर इज ए कहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ए यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। ओके, सो क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, ये वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे क्या बन गया, बीसी बन गया। So you need to mention that what is angle B, what is angle C. For that we will find out the value of angle A, and after that we will check that BC is the hypotenuse. So BC square will be equal to AB square, and these are squares actually. These are squares. So we can say that BC square is equal to AB square plus AC square. Okay, everyone. 15 meter long ladder is placed against a wall to reach a window of 12 meter high. ओके, 15 मीटर लॉन्ग लेडर है। लेडर कैसी प्लेस करी रहती है, ऐसे प्लेस करी रहती है, ठीक है। वॉल टू रीच अ विंडो ऑफ 12 मीटर है। विंडो कितनी है, ये विंडो हो गई। ओके, विंडो यहाँ पर थी, यहाँ पे विंडो थी, ठीक है। सो लेट मी राइट द वैल्यूज। दिस इज 15 मीटर लॉन्ग एंड द विंडो वाज 12 मीटर। So what is the distance of the foot of the ladder? So this is foot of the ladder and this is the wall. Okay, so इन दोनों का distance पूछा गया, x ले लीजिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में लेडर है, वॉल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ओके, hypotenuse square is equal to the sum of perpendicular का square plus base का square. Okay, x square पूछा है, leave the x square here, नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं, 15 15 जा 225, okay, 12 12 जा 144, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x square is equal to कितनी आ जाएगी, भाई 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अभी आप इसको खुद सॉल्व करेंगे और you will find that value comes out to be what? Comes out to be square of something. Okay, that value will comes out to be the square of something. सारा सेल्फ कैलकुलेशन मैं ही कर लूंगी, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हैं। Just subtract 225 and 144. Just tell me that in the chat box what the answer will be. Okay, and that will comes out to be the square of something. So you will write, जैसे अगर 100 कितना आ गया, 64 आ गया, तो you can write 8 8 is 64. Okay, clear? 81 आ गया, so what you can write, 81 आ गया, तो what you can write, you can write that what, 9 9 is 81, so answer is 81. So 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, so that will be x square, so x is equal to 9. Clear? Okay, so let's have a quick quiz. Which of the following cannot be the sides of a triangle? ये हमने कल भी किया था. Just take a screenshot and just write in the comment box that what answer will be true. Which of the following cannot be, नहीं हो सकता. Okay, so हमने यहाँ पे कौन सी theorem apply करेंगे? The sum of any two sides of a triangle is greater than third side. Just take a screenshot, pause the video and just solve it. Okay, I'm not solving it because from the last 2 or 3 session I'm the only doing all the questions. So these are for you. Just take a screenshot, pause the video and answer me in the comment box, because in the again in the further 5 minutes the class will be down, means class खत्म होने वाली है, ठीक है। Find the value of unknown x in the following figure. अब ये मैं आपको बता सकती हूँ कैसे करेंगे। भाई 90 है, अगेन कुछ नहीं दिया है बट सिंबल दे दिया तो 90 है। अब 90 प्लस x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब 90 नंबर है तो कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, x प्लस 5x 6 6 हो गया।
and 180 minus 90 will be 90. तो आप यहाँ से इसको solve करेंगे और मुझे x की value बताएंगे. Okay, clear? So I need all the answer in the comment box. A is this. Again, question में कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये क्या है, तो हमें खुद concept लगाना है. This is 90 degree. So exterior angle 130 is there. So you can find out the value from here. And how you will find this? Now this you are going to tell me. Okay. So here is the last question of today's. This is very easy. 5, 12. What will be the hypotenuse? Again a sign is here. So this is a right angle triangle. You need to remember where the half rectangle sign is there. ऐसा sign है कहीं पे भी, वहां पे आंख बंद करके you need to write 90 degree. Clear? So I want these answers who all are here and who will be watching this video after that. Just drop me answer in the comment box that ma'am इसका answer ये है, so that मुझे भी पता चले कि students are enjoying in doing questions, so that in further classes we will be having more questions. Right? All right. So here is the challenge of the day. How can you make the following equation true by drawing only one straight line? This is for you. करिए. 5 plus 5 plus 5 is equal to 550 दिखा है. आपको सिर्फ एक line draw करनी है and that should be straight. So how can you make this possible? Okay. Again, I want an answer of this in the comment box after the class. Okay. So what we have learned today, we have learned about the Pythagoras property in a right angle triangle. Or we can say that in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. Okay, what we will write for that? We will write hypotenuse square is equal to perpendicular square plus, this is very important, this is sum base का square. Okay, so again मैंने आपको ये भी बताया था, कभी भी कोई भी बोले कि what is Pythagoras theorem, तो HBP तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ABC भी बिल्कुल नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है the square of hypotenuse is equal to the sum of perpendicular square and base square. Okay. So yes, thank you slide is there, and it's raining. Oh no. Okay, so you can say that up it's the end of the session. Tomorrow we will be having a new chapter. Okay, so till then subscribe our channel, press the bell icon so that you will never miss any update. You are going to like, comment तो देखिए please, आज वाली क्लास में तो I need the comments who are watching it now and who will watch it जब भी आप देखना चाहें इसको, तब आप मुझे कमेंट करना है कि किसका आंसर क्या था. सारे क्विज़ेस के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, and for the challenge of the day also. And if you like the video, just share it to your classmate, to your society friends, so that everyone get to know that YouTube is live with Swiflearn. Okay, so till then, bye-bye, take care. We will meet tomorrow at the same time and at the same channel, which is Swiflearn. Okay, bye-bye.